हाउ टू हैंडल जीएसटी नोटिसेस जो सितंबर के लास्ट वीक में आए हैं, बिकॉज दे वर गोइंग टू बी टाइम बार्ड। देखिए, जो 73 सेक्शन 73 में जो नोटिसेस आए हैं, दे आर फॉर 17-18। 17-18 की जब मैं बात करता हूं, सो इट इज फ्रॉम जुलाई 17 टू मार्च 18। तो इसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट थी 31 दिसंबर 2018, जो बढ़ते बढ़ते 5th ऑफ फरवरी 2020 आ गई थी। नोटिसेस 33 मंथ्स में सर्व होने हैं और 36 मंथ्स में ऑर्डर पास होना है। तो ऑर्डर पास होने की डेट थी 5th ऑफ फरवरी 2023, यानी नोटिस सर्व होने थे 5th ऑफ नवंबर 2022। तो इस डेट को जुलाई 2022 में नोटिफिकेशन के जरिए 13/2022 बढ़ाया गया। इसके बाद फर्दर एक मार्च 2023 में जो नोटिफिकेशन आया, उससे ये बढ़ा दी गई थी। 31 दिसंबर 2023 को ऑर्डर सर्व होना है और आपको नोटिस आने की डेट थी 30 सितंबर 2023। तो अब जरा हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपको, तो ये नोटिस जो सर्व हुए हैं उस पर जरा डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि जो भी हम आज डिस्कस करेंगे, दिस इज ओनली फॉर शेयरिंग नॉलेज, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल एडवाइस। Me or this channel would not be responsible for any action or inaction taken on the basis of any discussion on this video. So we have got one question or one comment from कार्तिक सिंह जी। आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पर लिखते रहिए या पॉइंट्स और कमेंट्स लिखते रहिए, तो वो बाकियों को भी दिखते रहेंगे। सो एवरीवन वुड बी अवेयर कि भाई आप क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वट एवर योर क्वेश्चंस आर। So what Karthik ji is saying, that unnecessary and irrelevant SCN are issued again and again, even after proceedings are dropped earlier. I agree to you. Even I have seen many of the cases जहां पर last year ASMT 10 आया, reply was filed in ASMT 11, ASMT 12 was passed. ASMT 12 means the proceedings were dropped, and now today on the same point, same issues, a fresh SCN has been issued. And this is one of the biggest mistake. See, see what we understand, Karthik ji, that these notices were going to be time barred. Therefore, department has used softwares for issuing notices. When this software has processed, it has ignored ASMT 12 pass earlier, or in many cases, in fact, the tax was demanded through DRC 01A or DRC 1, and the tax was paid through DRC 03. In these cases also, where already DRC 0, the tax along with interest has been paid through DRC 013, then also they are making issues. So we have got one more question. Notices are issued on 30th September or 3rd October. Is it time barred? See, if notice pertains to FY 2017-18 and it is 73 notice, section 73, it should have been served by 30th of September electronically, or it should have been uploaded on the portal. But if physicals you have received on 3rd October and it was not uploaded on 30th September and email was also not communicated to you on 30th September,
then this is a time barred notice. Okay. So you are saying, and new SCN are issued, no SMT 10 or DRC 1 are issued. Directly SCN are issued for the same para raised earlier, which was dropped. So you mean to say that earlier DRC 1 was issued, you gave the reply, and it was dropped. So for dropping, did you got an order in DRC 07? If not, then theoretically it is valid. So Section 73 notice received physically on 3rd October, no email, no SMS, not even on GST portal. In this case, the notice which has been served to you is time barred. Now you should contest the delivery and validity of the notice. And I believe they cannot come for 74 because there is no malified intention or evasion of tax at your end. So such notice is not valid. जी देखो, सीधी सी बात है, नोटिस 73 का है, उसकी डेट सिंपल क्या थी, 30th of September. अगर उन्होंने नहीं दिया तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, दे कैन नॉट सर्व यू नोटिस. They might try to serve you notice in 74 with limitations, we welcome. But to serve notice in 73 is simple. To serve notice in 74, they should have a primary condition to serve notice in 74 is that there should be evasion of tax or intention to evade tax. अगर इंटेंशन टू इवेड टैक्स नहीं है, इवेशन ऑफ टैक्स नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता. दे कैन नॉट कम विद 74. So you can be rest assured that 74 is not possible. Arjun Pathak ji, I hope I could have given a favorable reply to you. But recently, in case of Govind Constructions, from Honorable Patna High Court has favored the department, and that is not. इनके पास 16 सबसेक्शन 4 में हमारे काम की चीज ये है कि डिपार्टमेंट की साइड से, गवर्नमेंट की साइड से रिलैक्सेशन आ जाए. मैटर जब तक सुप्रीम कोर्ट से नहीं आएगा तब तक किसी के सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला. मतलब इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. Now, when Arjun ji, when you are asking issues about DIN, so DIN is not mandatory in various states. कुछ ही states ने DIN को mandatory करा हुआ है, other they can do. For CGST, DIN is mandatory. Kerala has made DIN mandatory. Tamil Nadu has made DIN mandatory. I think Andhra or Telangana has also made DIN mandatory. But otherwise, other states. In fact, we have got Supreme Court judgment also on this point that DIN should be made mandatory for Pan India for both state and central. But again, can Section 65 audit for this to be conducted? Yes, they have the timeline. Yes, they can do it. So notice in DRC 01 is sufficient or DRC 01A. See, DRC 01A is for what we say pre-show cause consultation, which has used the word uh, may now. Earlier it was shall, now it is may. So it is not mandatory in all of the cases. In fact, for 74, it is not mandatory at all. As per excise circular, if you ask me, I will say no, that is mandatory. So there must be reasonable evidence, and so there should be a reasonable evidence as required by Section 140. Yes, there should be reasonable evidence for
See, you are coming with saying that there should be intention to evade tax. So we need, for intention to evade tax, yes, we need something. Uh, they have to come with this. Otherwise, sir, ऐसे नहीं हो सकता that they will say, no, no, we are going with this. So, see, 74 is not easy. For department also, it's not easy. कहने की बात है कि 74 कर देंगे. करेंगे तो उसके भी तो इश्यूज है ना. So both issue and communication for 73 notices should be, if it is via post, am I correct? Yes, in my humble opinion, I reserve the right to be wrong. It should have been served to you by 30th of September. See, there's a one group of expert which says, okay, 31st December को order pass होना है, we will go with 90 days. There is a group. But the word use is month, and with the month, I believe it is month and calendar month is there. Okay. So my client was served upon a notice under section 73 giving cause you have availed ITC on motor vehicle, whereas my client has not taken or availed ITC on purchase of motor vehicles. So these are system generated notice, therefore they have done such kind of mistakes. Or these are issued based on HSN. So you cross check whether they had purchased some vehicle, and in that case, you can simply reply that we have not availed any ITC on this base. Sir, in notice, IGST amount is not mentioned. So even if they have not mentioned that, section 20 says that all other things would be applicable. I believe if there is a recovery in IGST, uh, in that case, then it has to be paid. And in that case, see, Mahesh ji, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आईजीएसटी क्योंकि शो कॉज नोटिस में नहीं लिखा हुआ तो इसकी डिमांड नहीं बनेगी. We have certain group of experts which are of that view. My humble view is कि अगर कैलकुलेशन में आ रहा है और बाकी सब चीजें हैं तो देखो, अगर बनता है तो दे दो. अगर कोई बहुत बड़ा इशू है तो बहुत ज्यादा अमाउंट है, देन यू शुड डिस्प्यूट. वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए. देखो, हम लड़ाई करने जाएं तो उसमें वैल्यू फॉर मनी एंड थॉट प्रोसेस होना चाहिए. Can DGGI issue summons for tax period for which departments conducted audit? Can DGGI also issue show cause notice? DGGI can issue summons. There is no bar for them to issue summon. Uh, they can issue notice. They will come with 74 notice and 122 penalty. उनके notice ऐसे ही आते हैं 74 and 122. वो 73 में नहीं आते. How it should be replied? नहीं, आपका क्वेश्चन क्या था? माय क्लाइंट वाज सर्व्ड आईटी से मोटर व्हीकल. मैंने आंसर कर दिया कि आपको उसको रिप्लाई करना है कि शायद ये हमने परचेज करा है और एचएसएन होगा, बट आपने अवेल नहीं करा. जस्ट सिंपली रिप्लाई. सर, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू DRC 03 बाय क्रेडिट लेजर. डिपार्टमेंट इशूड SCN फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. केस में समझा नहीं. लेट्स फ्रेम एन एग्जांपल. आपकी अगस्त की लायबिलिटी थी और वो आपने अगस्त की लायबिलिटी थी, आपने 10 से अक्टूबर में जाकर पेमेंट कराया उसका आईटीसी, आज के आईटीसी से. तो वो गौरव जी सिर्फ वो इंटरेस्ट मांग रहे होंगे. अगर आपके पास उस दिन भी आईटीसी था, जो कैश पेमेंट है सिर्फ उसी पर वो आईटीसी मांगते हैं. अगर उस दिन भी आईटीसी पड़ा हुआ था तो मेरे हिसाब से उनका इंटरेस्ट नहीं बनता. सर, टाइम लिमिट टू कंडक्ट 65 इज 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ एनुअल रिटर्न. सर देखिए, जब तक 73 के नोटिस आ सकते हैं, दे कैन गिव. What is specific prohibition in act to avail ITC of CGST of other states? कंटेंशियस इश्यूज है सर. मैं भी काफी साल से बोल रहा हूँ इसके बारे में. जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स.
The notice in notice IGST amount is not mentioned. It is intentionally left because Section 6 gives power to states. Yet, see, they have the power. They can do calculations. They can recover money. वो तो स्टेट ऑफिसर हो या सेंट्रल हो, वो तीनों के लिए एक ही होता है, वेदर रिकवरी इज इन एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी. सो मेरा मानना तो ये है, नॉट गो बियॉन्ड दिस. सी, अगर अमाउंट सब्सटेंशियल है, देन यू कैन ऑल्सो लिटिगेट ऑन दिस मैटर दैट in show cause notice nothing was said about IGST, so recovery on IGST is not sustainable. ये पॉसिबल है, बट सी, Vrindavan Beverages has in Vrindavan Beverages, Honorable Supreme Court have said that show cause notice is foundation of litigation. So all case depends on the show cause notice, and order should be within four corners of this show cause notice. So अगर show cause notice में IGST का जिक्र नहीं है, so a group of expert will always say कि साहब इसमें तो GST नहीं लगेगा. And I don't know, I have not opened Twitter. ट्विटर पे किसी ने कोई कमेंट करा है नहीं करा है, आई डोंट नो. तो मैं साथ में अपना मोबाइल पर लेकर बैठ जाता हूँ अगर किसी ने उस पर कमेंट करा है, सो दैट आई कैन आंसर देम आल्सो इफ देयर इज एनी. और शायद कोई प्रॉब्लम होगी कि इसमें दिख नहीं रहा, या फिर वहां पर किसी ने कमेंट ही ना करा हो. What will prevail? Rule 142(1) relating to procedure for notice or Section 169? Since one of the notice I am handling issued in DRC 1, mentioned Rule 41, but not served electronically. See, ideally that should see 73, 74, 73, 74 की जो बात चल रही है कि उसकी रिकवरी की बात होनी है. आज तो खैर जिगर 73 का, तो 73 इज अलाइन विद 142. एंड द अदर सेक्शन 169 से कि साहब आपका जो नोटिस सर्व होना चाहिए वो इस मोड से होना चाहिए, एंड द लास्ट मोड इज अफिक्सिंग एट योर प्लेसेस ऑफ बिजनेस. सो for servicing of notice for 73, you will go with Rule 142. Rule 142 cannot overpower 169. तो relevant rule तो 73 का 142 है, and yes, you can challenge it that I have not been served electronically. पर मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में जितने भी नोटिस इशू हुए हैं, all of them have been uploaded on the portal, and uploading on the portal is equivalent to servicing you on online. In your case, you said that on 3rd October you were served notice physically, and there was no uploading on the portal. There was nothing on electronically, or you have not received any SMS also. So yes, it is a problem, and you can challenge service of notice or validity of service of notice, and you can get this notice quashed. डिपार्टमेंट से तो होगा नहीं, डिपार्टमेंट लेवल पर आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा. सर, can tran 1 tran 2 notice can be served in SMT 10? What is the issue? I don't know what is the issue here. अगर आप इशू बताएं 1 and 2 में क्या है, मतलब ट्रान 1 ट्रान 2 का इशू क्या है, तो SMT 10 वैलिड है नहीं है तब बता सकता हूँ. बट in my humble opinion, Tran 1, Tran 2 notices, issues related to Tran 1, Tran 2 should not be part of SMT 10, because SMT 10 से उनका लेना देना नहीं है, because it is from previous year or previous regime से जो credit आ रहा है उसकी बात हो रही है. In fact, in one of the cases I had seen that for supplies, for having exempt supplies in the current year 17-18, they have asked the person to reverse credit of Tran 1 Tran 2, दो Tran 1 Tran 2 क्रेडिट लिंक में था ही नहीं, और वो भी ऐसा इशू आया हुआ है. और अभी तो खैर 17-18 के लिए तो
अब एसएमटी 10 तो नहीं देगा डिपार्टमेंट, दे हैव सर्व्ड डीआरसी 1 और आगे चल के भी वो डीआरसी 1 ही देंगे। कैन दे चेंज डीआरसी 1 आफ्टर point out the mistakes they have made? They have revised the notice and shared new DRC 1. So new, आपने DRC 1A का रिप्लाई दिया, they have issued DRC 1. So they have they have issued part A of DRC 01A. You have submitted reply in part B of DRC 01A. Now they have not accepted your or corrected their mistake. They have issued a fresh notice in DRC 1. 17-18 का केस होगा नहीं है. It should be of any other year case. Yes, they can correct their mistakes in this way. मेरे हिसाब से तो इसमें कोई गलती नहीं है. There is no foundation कि DRC 01A के जो पॉइंट्स थे वही DRC 1 में आने. They can add other points also, which were not part of DRC 01A. And in fact, DRC 01A is not mandatory also, technically. Wrong availed ITC not shown in reversal in 3B in 17-18, rather reduced from ITC of 18-19. Is it okay? Wrong availed ITC. So if you have not reversed in that year, so आगे जाके रिवर्स कर रहे हैं, department has the right to ask for interest. Of course, there will not be any penalty because transactions are on record. टाइम पे नहीं करा तो इंटरेस्ट तो डिपार्टमेंट का बनता है, इतना अधिकार तो उनका है. Sir, we already mentioned in answer as well as in portal for personal hearing, but PO had issued order without personal hearing and issued a huge demand. File a appeal against this, and if you have requested personal hearing, see, personal hearing is mandatory. Section 75 subsection 4 says कि अगर आपको कोई भी एडवर्स ऑर्डर पास करना है तो आपको पर्सनल हियरिंग देनी ही देनी है. तो आपको पर्सनल हियरिंग मिलनी चाहिए थी. अगर उन्होंने पर्सनल हियरिंग नहीं दी तो ये गलत है. और आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने रिक्वेस्ट की थी पर्सनल हियरिंग की. से अगर आपने पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट नहीं की और तब उन्होंने नहीं दिया, तब प्रॉब्लम है. मतलब आपने पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट करी और उन्होंने आपको पर्सनल हियरिंग नहीं दी. आप ये देख लेना कि जो आपने रिप्लाई में फॉर्म अपलोड करा है वहां पर वो फॉर्म बाय डिफॉल्ट नो लेता है. तो आपको वहां पर यस करना होगा. पर डू यू वांट पर्सनल हियरिंग, यस और नो? तो आपको यस करना होगा. Okay. So since notice has been served on 3rd October 17-18, now if it is served electronic, will it still be time barred? Yes, it will still be time barred. उनको 30th तक देना था. सी शुभम जी, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपको, आप अपने पोर्टल पर जाकर दोनों जगह चेक कर लीजिए. एक तो पोर्टल में होता है नॉर्मल नोटिस और एक होता है एडिशनल नोटिस. मेरे हिसाब से ऐसा डिपार्टमेंट नहीं करेगा कि आपको नोटिस सर्व ना करे जिसमें उनको इतना प्रेशर था. मतलब ऐसा ना हो कि आपकी फिजिकल एड्रेस पर तो आ गया और ईमेल आईडी शायद किसी और कंसल्टेंट की पड़ी हो या कोई ऐसी ईमेल आईडी पड़ी हो जिसको आप रेगुलरली यूज नहीं करेंगे, वहां तो नोटिस नहीं चला गया. प्लीज चेक कर लीजिए. मतलब बिफोर ITC of July import taken in other IGST प्रोसीजर मिस्टेक है, बहुत बड़ी बात नहीं. कैन ऑफिसर आस्क फॉर PL बैलेंस शीट एंड बैंक स्टेटमेंट इज रिटर्न? सर, सिवाय जन्म पत्री, कुंडली और गोत्र के सब कुछ मांगते हैं. स्कूटनी नहीं, इन्वेस्टिगेशन होता है आजकल ASMT 10. पावर कहां से मिली है भाई, मुझे भी नहीं पता. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ASMT 10 में मेरे अपने हिसाब से इतना सब कुछ मांगने की पावर नहीं है.
Can SMT 10 be served offline? Yes, subject to that has been uploaded on the portal. जीएसटी पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे फिर नहीं. I paid tax under Rule 42 and 43. Now I am served with notice for 73 for interest. Can it be waived by chance? So आपने पेमेंट करा है, लेट करा है, मंथली रिवर्स नहीं करा, साल में एक बार करा है. तो अगर आपने रिवर्सल खुद से करा है तो इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिक है. अगर नोटिस में दिया जाए ना दिया जाए, कैलकुलेट करा जाए या ना करा जाए, interest is automatic. Penalty is not. So you have to, if you have suo motu done, then interest. Tran 1 filed in nil in 1718. After Supreme Court judgment, they tried but was not able to file. What to do? Officer is asking us to file it. Sir, I will not be the right person to answer this. This is you who has to decide how you want it. Because Supreme Court ने भी काफी समय दिया था खोलकर. आप उस समय ग्रीवेंस वगैरह रेस करते या कोई एप्लीकेशन लगाते, और इफ देयर समथिंग ऑन रिकॉर्ड कि नहीं हो सकता, आई लीव इट टू योर विजडम सर. आई विल नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेरी. व्हाई ऑफिसर नॉट फॉलोइंग टाइमलाइंस ऑफ ऑडिट? बाकी सब चीजों में टाइमलाइन फॉलो हो रही है, बाकी चीजें फॉलो हो रही हैं. आई लीव दिस टू योर विजडम. सर, जीएसटी ऑडिट अपने आप में एक इस तरह की चीज बन गई है. सी टाइमलाइन इसलिए ब्रीच नहीं हो रही बिकॉज समवन हैज नॉट challenge this, that audit should be done of 1 year. Will you appreciate this, that audit can be done for continuous 4-5 years? नोटिस इस तरह आते हैं कि हम आपके 4 साल का ऑडिट करना चाहते हैं, 3 साल का ऑडिट करना चाहते हैं, और जब नोटिस इस तरह के आते हैं तो फिर वहीं पर ही वो जो टाइमलाइन है जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो उससे एंड तक चलती है. ओके, तो वो आप प्लीज एक बार देख लीजिए कि कैसे करना है इसमें. आई वुड सजेस्ट यू टू take case of individual how they are handling. और इंडिविजुअल ईयर्स को बाइफरकेट करोगे तभी आपको टाइमलाइन क्लियर दिखेंगे, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं कि टाइमलाइन में ऑडिट कंप्लीट नहीं हो. How to deal with DRC1 notice on the Tran 1 credit claim by trader on basis of excise duty on purchase invoice up to Tran 2 was not filed. So Tran 2 फाइल तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइमलाइन बढ़ा दी थी तो भर दिया होगा. So notice mentioned your supplier has filed nil GSTR3B. You have to pay tax because he has not shown sales to you in GSTR1. Any remedy? See, sir, if that person is having valid registration and it is active till today, uh, or even if it is not active today, you can file a civil case against them. But if the department has not received money, they should first try to recover money from them, because you have an invoice and you would have made payment through banking channels and other things you would be having. You can also file a civil case against that vendor if this is mentioned in your agreement. If it is not mentioned, then also you should try to take a civil suit against it. और एक ना सॉफ्टवेयर में जीएसटी पोर्टल में भी ऑप्शन होता है कि अगर आपने वेंडर टू वेंडर कम्युनिकेट करने का, एक वेंडर से दूसरे वेंडर को आप मैसेज भेज देते हैं, तो आप वो मैसेज भेज देते तो भी शायद आपकी हेल्प हो जाती उस टाइम अगर आपने कर. सर, हाउ टू चैनल नोटिस फॉर डिफरेंस बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट आईजीएसटी टेकन इन अदर? सर, ये तो आपको प्रोसीजर में बताना पड़ेगा. सर, रेवेन्यू न्यूट्रल, मेरे से गलत रिटर्न ही तो फाइल हुई है, रिटर्न में नीचे के बजाय ऊपर लिख दिया बस. ये तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. इसमें कोई चैलेंज थोड़ी कर रहे हैं आप, नोटिस को चैलेंज थोड़ी कर रहे हैं, मेरिट पर आप
आंसर कर रहे हैं। चैलेंज तो ये होता है कि आप कह रहे हैं कि आपने नोटिस ही गलत भेजा, ये थोड़ी कह रहे हैं। कैन आई टेक रिफंड ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी रॉयल्टी अमाउंट पेड एंड लाइमस्टोन। रॉयल्टीज पर तो पहले ही बहुत झगड़े चल रहे हैं। आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस एट दिस मोमेंट। अब मेरा सारा ध्यान सिर्फ 73 के जो नोटिस सितंबर में आए हैं वहां पर है। बट इफ नथिंग इज इन योर नेगेटिव साइड तो आप कह सकते हैं। If I purchase a car in Haryana and move it to Rajasthan and dealer charge IGST, which is correct, whether I need to generate e-way bill as item is more than. So you purchased a car in Haryana, moved it to Rajasthan, uh, and so this is in your capital goods. But you purchase a car in Haryana, तो उसने IGST क्यों लगाया आप पर? Means I'm unable to understand. And yes, if you have purchased it on your Rajasthan details at Haryana, then if you are moving the car, then ideally e-way bill should be generated. Because for movement of capital goods, JCBs, etc., we generate e-way bill. Time gap between intimation of DRC01 and actual SCN is 1 day. Has already filed a reply for intimation in Part B on same day of intimation. Isn't it violation of? See, DRC01 Part B on the same. नहीं सर मैं समझा नहीं. DRC01 ही होगा. The time gap between intimation in DRC01 and actual SCN DRC1 1 day. So they have issued you DRC01A Part A. You gave the reply DRC01A Part B. और नेक्स्ट डे उन्होंने आपको SCN दे दिया. से आप इसको वहां जाकर चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में. बट इफ इट इज अ मेरिट केस, reply it and get solution. But if it is, do you feel that merits are weak, challenge it. Can we go for appeal against notice for ITC await for purchase? All proof is with us, but department should summon to us using. See, GST नंबर जिनका सुओ मोटो कैंसिल हो रहा है, डिपार्टमेंट आपको नोटिस तो देगा ही. अब वो बाद में चल के बात होगी कि डिपार्टमेंट इसमें नोटिस दे सकता है, नहीं दे सकता, कितनी वैलिडिटी है, कितनी नहीं है. नोटिस के अगेंस्ट आप अपील में नहीं जा सकते. नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई कीजिए. यू गिव ऑल योर सबमिशंस. सबमिशंस के अगेंस्ट में फिर जब आपको ऑर्डर आएगा, जो DRC07 आएगा, यू विल गेट DRC07 अगेंस्ट द शो कॉज नोटिस. देन अगेंस्ट दैट DRC07 you can file an appeal. But you cannot file an appeal against the notice. You need an order against you. Okay. Moreover, has opted for personal hearing in DRC01B still was not. But DRC01B में तो personal hearing देनी ही नहीं है. Who said a personal hearing is prescribed? As per my understanding, there is nothing as. I think there is a confusion between you and me at this point. See, DRC01B Part A is issued. You have replied to Part B. Now they will come with DRC01 if they are not satisfied. And see, they are not required to pass any order also. कहीं ऐसा लिखा हुआ भी नहीं है कि उन्हें उन्हें अगर रिजेक्ट करनी है आपकी एप्लीकेशन तो कहीं पर ऑर्डर पास होना चाहिए. नहीं, ऐसा भी नहीं है. पर्सनल हियरिंग की तो बात ही नहीं होती DRC01B में. कहीं है ही नहीं. पर्सनल हियरिंग के ऑर्डर की भी बात नहीं है. And in fact, if my understanding is right, to DRC01C and DRC01D may be same provisions continued. So there is no nothing as said that
you can be provided personal hearing. मतलब I'm pretty confident on this point, but मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप TR-01B PDF में देख लीजिए या उसके प्रोसेस में देख लीजिए। पर्सनल हियरिंग की तो बात ही नहीं है। नोटिस इशू हुआ in part A, within 7 days you have to reply in part B, and then if your reply is satisfactory, then answer A. If your reply is not satisfactory, then department will go with DRC-01. तो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है सर। इनफैक्ट DRC-01B का केस में तो डायरेक्ट रिकवरी है। इट इज डायरेक्ट रिकवरी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। DRC-01 भी नहीं देना, बट ही इज अ गुड मैन इफ ही हैज इशूड DRC-01. ITC allowability on insurance and repair service of goods loading motor vehicle. If you are into this business, it is allowed. ये आप पुराने वाला केस जहाँ थर्ड को आया है, ये वो केस है शायद। ये देखो क्या होता है ना, देखो प्लीज टू अंडरस्टैंड माय लिमिटेशन आल्सो। आगे पीछे आप तो अपने हिसाब से रिप्लाई करो, मैं तो सीरियल वाइज सारे कमेंट्स लेता जा रहा हूँ, तो कई बार हो सकता है कि मैं कुछ चीज मिस कर जाऊँ आपके पुराने उससे। अगर कोई गलती हो तो प्लीज बता देना। ईमेल आईडी ऑफ एसएससी इटसेल्फ नथिंग इज रिसीव्ड इलेक्ट्रॉनिक, तो भाई साहब से तो आप चैलेंज करो ना। I have checked additional notices, also notice orders, email, SMS, only via post. Third, please go and challenge if you feel so. Sir, no, sir, notice will not take yes remark tick and it is by default telling no. नहीं सर, ऐसा नहीं होता। रिप्लाई में सर आप कोई बात नहीं, आप रिप्लाई में नीचे लिखो सर, और स्क्रीनशॉट लगाओ कि भाई साहब ये तो ले ही नहीं रहा हमसे, आप लेटर सबमिट करोगे, ये तो रिप्लाई का ऑप्शन दे रहा। डिपार्टमेंट ने कुछ केसेस में क्या किया है 73 में, फॉर एग्जाम्पल नोटिस हैज बीन इशूड ऑन 30th और नोटिस हैज बीन सर्व्ड टू यू ऑन 30th. So what they have did, they have said, okay, you can file reply by 30th of October, let's say. But your personal hearing date is 15th of October. They have given personal hearing before submission of reply. उस केस में ऐसा हो सकता है. But in that case, you should have raised an objection once you have received notice. If that is the case, not sure. आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, आपको ज्यादा पता है आपके कैसे। So supplier is working from his principal place of business and department block his credit on the ground that his supplier not found in principal place of business. तो आप रिप्लाई कीजिए, you raise an objection against this. Raise an objection. See, basically डिपार्टमेंट, ये तो चलो अच्छी बात है कि कई केसेस में तो डिपार्टमेंट ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देता है। दैट इज गुड कि रजिस्ट्रेशन सस्पेंड नहीं करा, आईटीसी ब्लॉक करा, आईटीसी खुलवाइए, प्रूव कीजिए, एंड आईटीसी शुड बी ब्लॉक्ड अप टू दैट एक्सटेंड ओनली। और वो सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा है, क्या करा है वो भी देखो। मान लीजिए उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है और उसने वापस रिवोकेट करा लिया, तो आपका भी एक ग्राउंड बढ़ जाता है कि सर वो तो रिवोकेट हो गया, मेरा आईटीसी तो खोलो। ओके सर, 2A में बिल का आईटीसी आ रहा है 17-18 का, बट 1 जुलाई से हमारे सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो क्या हमें टैक्स जमा करना पड़ेगा? सर, suo motu cancellation is one of the biggest problem in ITC, and when they suo motu cancel it, then department, in maximum to max cases, department demands money from you or reversal of ITC. Super controversial, super litigative topic. I would recommend you check all the facts and take decision on the basis of facts of each individual case. For example, मान लीजिए जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा था और
उसने अप्लाई कर दिया रिवोकेशन के लिए, और कुछ दिन बाद रिवोकेशन मिल जाता है, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर वो रिवोकेशन के लिए भी नहीं डाल रहा, और मान लीजिए वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर भी नहीं मिला, तो थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे क्रेडिट को लेना, क्योंकि सच काइंड ऑफ क्रेडिट इज सब्जेक्ट टू रिस्क एंड लिटिगेशन, सो you have to be prepared for both of the things. Sir, please guide me on seeking extension for all kind of notices for relying, such as SMT10, DRC1. Why you need extension for all of the cases? Extension is only when you have a sufficient cause. Sufficient cause नहीं है तो extension नहीं मिलनी चाहिए. If you have a sufficient cause, merely draft a letter, write what is the cause, why you want extension, and then you will get extension. Okay? ये थोड़ी कि जो भी नोटिस आएगा जी मुझे तो एक्सटेंशन लेनी है, नो नो नो, दैट्स नॉट द केस, प्लीज. Thanks for prompt today, but one point added that as GST portal says yes tag, any judgment of this, किस चीज की बात हो रही है पहले तो ये बताओ, पॉइंट मिस कर गया मैं. फिर आपका पढ़ता हूँ. परिमल जी, क्या था आपका पुराना इशू? तो ये बड़ी गड़बड़ होती है सर, भूल जाते हैं. Sir, we already mentioned in answer as well as on the portal for personal hearing, but PO has issued order without personal hearing and issue of huge demand. Okay. तो आपका डिमांड ऑर्डर निकल गया है बिना आपको पर्सनल हियरिंग दे. यस, तो आप इसमें पॉइंट रेस करिए. आप अपील में जब जा रहे हैं तो आप अपील में ये ग्राउंड भी लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वाज नॉट फॉलोड एंड आवर पर्सनल हियरिंग वाज नॉट प्रोवाइडेड. यस, दैट कैन बी डन. दिस इज अ प्रोसीजरल डिफेक्ट, एड ऑन थिंग. पर आप मेरिट का भी ध्यान रखना कि आप केस में मेरिट हो. सिर्फ इसी पॉइंट पर केस लड़ने मत पहुंच जाना. मेरिट्स अलग हैं और प्रोसीजर डिफॉल्ट अलग है. प्रोसीजर फॉल्ट अलग है. सॉरी. इन 1718 3B टैक्स वाज रॉन्गली पेड इन, ये बहुत गलती हुई है. आई गॉट A1710 and I replied but I am served with 73 for the same. See, if you have paid in wrong head, the law is simple. Law says pay in the correct head and seek refund. The issue here comes that क्या जब मैं आज पे कर रहा हूं और वापस रिफंड मांग रहा हूं, क्या उस पर 2 साल की टाइम लिमिट लगेगी? What if you had paid CGST and SGST and the other party has claimed that credit? जिसके पास गया है क्या उसने क्रेडिट क्लेम कर दिया? So there are, see, law does not take care of each and every situation. You have to be careful what you are doing, but 73 notice, if you accept that भैया मुझसे गलत हेड में पे हो गया, that is perfectly valid. हम हर केस में नहीं कह सकते कि भाई वैलिड नहीं है नोटिस. If there is a mismatch, see, मैं फिर बता रहा हूँ, I am just discussing generally. This session or whatever I am saying should not be construed as professional advice or legal advice. Uh, you should take action as per your wish. We will not be responsible for any action or inaction taken by you or not taken by you. Please. If there is a mismatch in GST 1 and 3B for 1718, department does not issue any notice. Can they issue notice for the recovery? The answer is no. If they have not issued notice in 73, they cannot come for 74 because there is no intention to evade tax. Intention to evade tax, जब आपने कोई चीज ऑन रिकॉर्ड रिटर्न्स में डाल रखी है 1 और 3B में, तो इंटेंशन टू evade टैक्स तो हो नहीं सकता ना. ओके. SCN and DRC01 received for difference between GSTR1 and 3B for 1718, although amendment filed with
September 18 GST. How to? So आपको reply यही करना है that see these are system generated notice which have ignored other things. So आपको उसको reply यही करना है that this has been corrected in next year. Okay. Thanks for putting a question personally selected. Yes, okay. तो ये तो बात हो गई होगी आपकी तो हो गई है ना? बिकॉज सो ये आपका वो केस है जहां आपने हरियाणा से कार खरीदी है, यू बॉट अ कार फ्रॉम हरियाणा and you have given Rajasthan letter, so because it is of more than 50,000, you should generate e-bill. I hope this is the question. Sir, if I had e-way bill from my supplier and he forgot to update my invoice in his GSTR1 and I received SCN for so that, so can I use SCN as a ground that I am not able to get declaration from? तो उन्होंने उस मंथ में मिस कर दिया होगा, नेक्स्ट मंथ में तो दिखाया होगा. सो इफ दे हैव मिस्ड इन सेल, लेट्स से दे हैव मिस्ड इन अगस्त मंथ, आपके टू बी में दिखा नहीं होगा, तो आपने बता दिया होगा उसको. ही वुड हैव अपडेटेड दैट इन सितंबर और अक्टूबर मंथ. तो आपको ये क्या 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा इफ यू हैव क्लेम्ड आईटीसी. बट इफ दैट इज नॉट विजिबल इन योर जीएसटीआर टू बी, so if you are claiming that ITC, that is always subject to risk and litigation and interest too. GSTR 3B filed in during amnesty scheme launch in. See, I've been saying from day one that these are not amnesty scheme. These are only and only late fees waiver, interest waiver or reduction scheme. So technically you were not allowed to claim ITC. जो 6 and 16 subsection 4 से बार हो चुका है. And I'm sorry to say, but that is the humble interpretation from my side. What I may say or suggest you at this point, if the amount is substantial, then please contest this case. That's all what I can say. And you will find that many people would be contesting these. So that will help. Okay. Because this is a problem for major people. Many people. Sir, officer send me intimation under section 73 for 1718 in email before 30th night. But no DRC01 was served in this case because time barred. Officer asking me to bring document, settle the case. So in email he forgot to write 73. सेक्शन 73 लिखना भूल गया, बस इतनी गलती है उसकी, या कुछ और भी गलत है? अगर सिर्फ सेक्शन 73 लिखना भूल गया, बाकी सब कंटेंट ठीक है, then in my humble opinion notice has been served to me. और अगर उसने 73 नहीं लिखा और बाकी भी कंटेंट ईमेल का गलत है, तो गलती है. बिकॉज सी कोर्ट्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू ऑल्सो अगर सिर्फ वो सेक्शन लिखना बेचारा भूल गया. गॉन आर द डे वेयर judiciary used to take side of businessmen. Today, judiciary are biased towards revenue. और रिजल्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है आपके केस में. आप पहले कंटेंट एक बार देख लीजिए, वेदर द कंटेंट इज करेक्ट और नॉट. और सिर्फ सेक्शन लिखना भूल गए, मे बी हैज रिटन द रूल आल्सो, देन इट इज ओके. In notice, only personal hearing date is given and no date of written reply. So in these cases, show cause notice is vague and cryptic. You can challenge. Order issued, personal hearing. I think we have discussed this. Can you suggest me how can I save ITC in 1819? We had filed 3B return in January 20. 1819 की तो डेट ITC की बड़ी नहीं थी. चलो आगे पढ़ता हूँ. So in that time we claimed all ITC 1890. So our department से reverse ITC because time barred. See time barred. Yes, it was a time barred. So 1819 की आपको 19 सितंबर तक लेनी थी, वो कोई डेट बढ़ी नहीं थी. So 16/4 आपका लगता है. You have to
So what department is saying is right within their purview, and you should go and contest this section 16 subsection 4. Be ready to challenge 16.4, and then if you get a reply, then you can file it. Okay. 1718, instead of ITC reversal in CGST SGST, we added that amount over liability in IGST due to mistake. So this is not revenue neutral transaction. आप उसे बताएंगे भी तो वो रेवेन्यू न्यूट्रलिटी को नहीं मानेगा, लिटिगेट ही करना पड़ेगा। और आगे चल के आपको फेवरेबल जजमेंट मिल गया तो ठीक है। सिर्फ इतनी सी एक दो लाइन पर सजेशन नहीं दिया जा सकता, रियली सॉरी, मतलब पूरा केस समझना पड़ेगा। देखो अगर सब्सटेंशियल अमाउंट है तब तो लिटिगेट करो, अदरवाइज कॉस्ट वैल्यू बेनिफिट एनालिसिस तो देखना ही पड़ेगा ना सर। सर डिमांड रेस आफ्टर ऑडिट अंडर सेक्शन 65 can be paid through ITC available. I don't find any issues with payment of demand in ITC. DRC 01 valid if not signed by anyone or proper officer. In many cases, these are being issued by what we say either software, or software में लिखा हुआ है कि these are computer generated, therefore there is no need for signature. तो ये वहां पर लिखा हुआ है, और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट आपको देखना पड़ेगा कि क्या बोला है। Is it mentioned that it is a computer generated or not? If it is a computer generated, then it's okay. So दोनों बातें हो सकती है। And in some cases, DIN has also been generated, though it is not signed. So I will say, okay, now, if DIN has been generated, DIN has been mentioned, just because it is not signed, we can't ignore it. Thank you, whoever Facebook user was, or I think I have covered all the questions which was asked. So if someone has any question, then they can ask me. So yes, sir, whosoever has issued, the issue here is not what they have issued. The issue here is whether in the notice they are saying that this is a system generated notice and does not need any signature. If that is mentioned, then unsigned notice is also valid. If this is not mentioned and DIN is also not generated, then such notices does not have any validity. So facts to fact, case to case vary करेगा। आप प्लीज पूरा एक बार देख लीजिए, ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि पूरा देखोगे तभी समझ में आए। So I hope this session was helpful to you. And thank you, आपने इतना समय निकाला for me. And would always so say that see, while drafting replies, you should be very careful that let's say they have raised 7 issues, तो आपको 7 के 7 issues की सर कोशिश कीजिए कि आप 7 issues के अलग अलग पैराग्राफ बनाएं। और जैसे हम स्कूल डेज में करते थे ना कि पहले क्वेश्चन लिख लिया फिर उसका आंसर लिख दिया, तो हो सके तो ये बाइफर्केशन भी कर दीजिए कि आपका उनका पॉइंट क्या है डिपार्टमेंट का, और उनके पॉइंट का हम क्या रिप्लाई करें, सो दैट इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, भाई कोई भी देखे तो उसकी समझ में आ जाए कि भाई ये क्या कह रहे थे और हमने क्या रिप्लाई करा। ओके, सो वी हैव गॉट 2 more पॉइंट्स, देख लेता हूँ। सो ये क्वेश्चन है सर,
अंकुश जी का, सर पेमेंट डन आफ्टर 180 days for ITC, like after 7 months, and we have not reversed the ITC. Should we reverse legally? The answer is yes. There is no. You don't have a choice. You should have reversed. Before 39 2023, only intimation for payment of tax for 1718 within 7 days was issued. Otherwise, TRC 01 under Section 73 will be issued, was received in mail, but no DRC. So intimation 73 में आपको आ तो गई, ऑर्डर उनको पास 31 दिसंबर 2023 से पहले करना है। अलग पे जिसको मान लीजिए सितंबर फर्स्ट वीक में दे दिया या जुलाई में दे दिया तो वैलिड तो है ही ना। द आईटीसी और इफ ओनली इंटरेस्ट टू बी पेड, क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था ना 180 days का, ओनली इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट। तो रिवर्स करते फिर क्लेम करते तो भी तो बात वही होती है, सेवन न्यूट्रल ना। If no invoice are reflected in 2A by the supplier due to suo motu cancellation of supplier, whether ITC can be claimed on grounds. So this is a litigative issue. I have answered so many times during this session. आप पीछे जाकर रिकॉर्डिंग देख लेना. It is a litigative issue. सप्लायर का रजिस्ट्रेशन सुओ मोटो कैंसिल हो जाता है, आपको आईटीसी क्लेम पर दिक्कत तो पड़ेगी ही. All such claim is subject to risk and litigation. और आईटीसी के बारे में तो मैं आज ही बोल देता हूँ, आईटीसी इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू रिस्क एंड लिटिगेशन, चाहे कितने ही कागज रखे बैठे. जीएसटी ऑडिट कैन बी कंडक्टेड फॉर 1718 after order issued under section 73. What is the time? See, they are technically merging with other years. Otherwise तो टाइम पीरियड उनका जा चुका है. 2-3 के ऑडिट कर रहे हैं, मर्ज करके चले. सर वेदर 16(4) is applicable for purchase of cotton in which RCM is to be paid. Again, RCM हमें पे करना है. इस पर एक बड़ा इशू हमेशा चलता आ रहा है कि एक ग्रुप कहता है कि साहब आरसीएम पर भी 16(4) लगता है, दूसरा ग्रुप कहता है नहीं साहब इनवॉइस इशू करने का डिफॉल्ट हुआ है तो आईटीसी आप मेरा नहीं रोक सकते, इनवॉइस इशू करने का इशू रहेगा, उसकी पेनल्टी लगाई जा सकती है कि आपने टाइम ली, क्योंकि उसका आईटीसी आपको सेल्फ इनवॉइसिंग से लेना था. तो वो लिटिगेटिव इशू है, कंट्रोवर्शियल है, कुछ साल में इसका आंसर मिलेगा. गुड इवनिंग प्रतीक जी. ट्विटर पे स्पेस कब है सर? जब आप बोलो स्पेस रख लेंगे. स्पेस 1-2 दिन में रख लेते. बताओ आप फ्री कब हो, आप बता देना, जब आप फ्री हो तब रख लेंगे. ठीक है, आप ट्विटर पे रिप्लाई कर देना सर मैं इस दिन इस टाइम पे फ्री हूँ, रात में घर जाकर रख लूंगा या 7 बजे ऑफिस से कर लूंगा, जब आप कहें. ट्विटर किस किस का क्या दिक्कत. 1718 का रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, परचेज है 16L की और दिसंबर. DRC 01 का नोटिस भी है, क्या हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? अगेन 16(4) टाइमलाइन कम्स. बहुत मुश्किल है. 16(4) में लिटिगेट करो सर. 16(4) का अगर आपको लगता है कि गलत है और आपको दिक्कतें हो रही हैं, देन यू गो एंड कम. अदरवाइज तो सब मुश्किल है. ओके. सो और बताइए सर, एनी न्यू बुक कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू? बहुत सारी लिख रहा हूँ, बट मेरे को लिख करना कई केसेस में खुद ही मजा नहीं आता. पर एक एक दो अच्छी बुक लिख रहा हूँ. होप सो जिस दिन मेरे मन से आवाज आएगी कि हाँ इस लायक है, मैं बुक वही वही मार्केट में लेकर आता हूँ जो मुझे लगता है कि मैं खुद खरीदूं. लिटिगेशन पर तो हमने बुक से अच्छा तो एक मॉड्यूल चला रखा है,
टैक्स प्रैक्टिस एंड लिटिगेशन मॉड्यूल। अभी नवरात्रि में 50% डिस्काउंट भी दिया था उस पर, अभी पूरे पैसों में मिलेगा। उसमें हम टेम्पलेट्स वगैरह भी देते रहते, वो मॉड्यूल। क्योंकि बुक लिख कर ना एक बड़ी दिक्कत ये आती है कि ये आजकल क्या है, जीएसटी बहुत डायनामिक हो गया है। एक हफ्ते पहले क्या था और आज एक हफ्ते बाद क्या है, वो केस लॉस की वजह से पूरा चेंज हो जाता है सिनेरियो। ट्राइंग टू राइट, in the process of writing couple of books. So ADT2 has been issued, demand paid against ADT2, not DRC. So you reply with the answer कि सर हमने पे कर दिया है, रिकवरी इज नॉट पॉसिबल। सिंपल, ज्यादा क्या सोचना है। 2018-19 आरसीएम फाउंड इन, कैन वी क्लेम आईटीसी। सर देखो, अगर ऑडिट नहीं होता तो आपको ये, आपने ये पे करनी थी, आप पे करते अगर ऑडिट नहीं होता। आप अपने ऑडिटर को रेडी कर लो कि आप 3B से पे कर दो। इफ ही एग्रीज तो आप क्लेम कर लेना। इफ यू पेड थ्रू DRC 03 तो क्लेम नहीं हो सकती। पर मैं तो सिंपल मानूंगा कि साहब आपकी लायबिलिटी थी आरसीएम की, और अगर ये ऑडिट नहीं होता तो आपको लायबिलिटी कभी भी नहीं दिखाते, भले ही चाहे आपको क्लेम मिलना था, रेवेन्यू न्यूट्रल है या कुछ भी है। व्हाट इज योर व्यू ऑफ आरसीएम ऑन गवर्नमेंट रॉयल्टी। आज ना पढ़ के नहीं आया, आज सिर्फ ना 73 पढ़ के आया था। ऐसे भारी भरकम क्वेश्चंस पूछ रहे हो, व्हाट इज योर गवर्नमेंट व्यू ऑन गवर्नमेंट रॉयल्टी। रॉयल्टी तो खुद ही टैक्स है, उस पे जो टैक्स है, मैं टैक्स है या कुछ और है, उस पर भी टैक्स देना है। मैटर वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, आंसर देने का कोई फायदा नहीं। पर आप सीधे से बताओ रॉयल्टी क्या है। एक तरह का टैक्स ही तो है ना जो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, तो टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा दो। कल को कोई कहेगा जी कंपनी लॉ की जो फीस दे रहे हो, एमसीए पर जो पेमेंट कर रहे हो, उसमें भी जीएसटी लगा दो। GSTR 9 not filed now. Dealer can file for GSTR 9 for 17-18। मैं देखो, अब तो लॉ ने भी कह दिया कि पिछले 3 साल से पीछे की आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। लॉ तो चेंज हो गया ना, तो अब तो नहीं कर सकते, पहले कर सकते थे, पेनल्टी लग जाती। अब फाइल क्यों नहीं करी भाई। 2 करोड़ तक तो पहले साल छूट दी थी और वो अभी तक चल रही है। एंड 2 to 5 करोड़ मैंडेटरी थी, और 5 करोड़ के ऊपर 9+9 सी जानी थी। बस सिर्फ इतना ही है ना। तो अब GSTR 9 कैसे फाइल करोगे, 3 years की तो लिमिटेशन लग गई ना सर। सर नाउ बिजनेस हैज एन एडिशनल कंटीजेंट लायबिलिटी कॉल्ड GST ITC। आप, you can say like this, I say it that ITC is now subject to risk and litigation। बस इतना ही फर्क है, आपके मेरे वर्ड्स में फर्क है, बट इंटेंशन आपकी मेरी और व्यूज आपके मेरे सेम है। सो मैं बात कर रहा था ड्राफ्टिंग की, एक मिनट समझ लो जाने से पहले। जब ड्राफ्ट करो रिप्लाई, तो उसमें एक एक पॉइंट का, मान लीजिए उन्होंने 8 पॉइंट रेस करें, आपके हिसाब से 6 के आंसर आप पहले दे चुके, फिर भी उन क्वेश्चंस को कॉपी करो, 6 के आंसर लिखो, 2 के लिखो। एंड में हमेशा लिखो लास्ट पैराग्राफ में दैट यू वांट अ पर्सनल हियरिंग। पर्सनल हियरिंग में जब भी आप साइन करके आओ, वहां पर नोट शीट में वो कई बार लिख देते हैं दैट द such and such person or authorized representative have visited and he verbatically repeated what he has said in this। तो ऐसा मत लिखवाया करो, लिखा हुआ करो कि भाई क्या डिस्कशन हुआ, कोशिश तो करो वो चेंज नहीं करते वर्डिंग, और उनसे कहा करो सर ये लिख तो लो मैंने क्या समझाया, पॉइंट्स ऑन रिकॉर्ड तो ले आओ। थोड़ा सा कोशिश करनी शुरू करो, आज चेंज नहीं आएगा, 2-3 साल में हम भी बदलाव ले आएंगे। तो थोड़ा सा कोशिश करो वहां पर कि कुछ और लाइन लिखवाओ, रादर देन
रिपीटेटिवली और मैकेनिकली यही लिखवा देना कि भाई ये आए, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आए और जो इन्होंने लिख रखा था वही मुझे पढ़ के सुनाया। तो आपने ऐसा तो नहीं करा होगा, आई होप आप ऐसा करते भी नहीं हो। तो थोड़ा सा इसको बेटर वे में लिखवाइए जरा जाकर, और थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि आपको थोड़ा सा अच्छा सा रिप्लाई बने। ठीक है, आई होप आपका मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा, कर दिया तो उसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ अगर मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया। बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि आपकी जो भी क्वेरीज है उनका मैं आंसर कर पाऊँ, एंड आई होप I would have, I have tried my level best to help you. Hope so. प्रतीक जी, मेरा भी रिक्वेस्ट यही होगी कि ऐसा होना चाहिए। If there is no output liability during the year and SSC only availed ITC not utilized, any penalty could not be levied by AO. There is a difference between 2A and 3B. कुछ नहीं सर, पेनल्टी नहीं लग सकती जब तक आप यूटिलाइज नहीं कर। पेनल्टी तो वैसे भी सर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू सो मेनी थिंग्स है। पेनल्टी मैकेनिकली तो कभी लग ही नहीं सकती, इवन दो रिटन इन द लॉ, they have to investigate. It was nice session. Thank you. Thank you, Shikha ji. Thank you, Shirish Mohta ji. It's always great to hear from you. Thank you. Sir, every week please arrange this session. Sir, promise नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है, हर वीक का तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट एक्सेप्शनल केसेस की मैं कोशिश करूंगा। अदरवाइज तो मेरी तरफ से वीडियोस रिकॉर्डिंग करने का कोशिश रहती है। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन फॉर योर टाइम। थैंक यू। फिर भी अगर किसी के क्वेश्चंस रह गए हो तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम या कहीं भी आप सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं तो आप उस पे कमेंट कर दीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। ऑफिसर्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन पर्सन हियरिंग सर, कोई बात नहीं, आप मिलकर तो आओ, कोशिश तो करो मिलने की, मिलो, मिलने जुलने से डायलॉग से ही बात बनती है। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंडिंग दिस